हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज हम ये लुक क्रिएट करने वाले हैं, देयर इज़ इट। सो ये है फेस्टिव लुक और ये आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये लुक आपको अच्छा लग रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्किन प्रेप करनी बहुत ज़रूरी है, मैं कर चुकी थी। क्लेंजिंग, टोनर एंड मॉइस्चराइज। ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइज करना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट ऑयली स्किन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। माई स्किन इज़ कॉम्बिनेशन स्किन, नॉट सो ऑयली एंड नॉट सो ड्राई। जस्ट नोज एरिया में मेरे ज़्यादा ऑयल क्रिएट होता है। एंड now we are going to apply concealer on under eye and other highlighting points, and we are going to blend thoroughly all over the face. And by the way, sorry, I forgot to tell you about primer which I applied before the concealer. So आप देख सकते हो मैंने कैसे कंसीलर अप्लाई किया है ताकि फेस लिफ्टेड लगे। एंड बस अब हम इसे फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट ब्लेंड कर देते हैं। Yes, now we lock it with a compact and then we are going to start our eye makeup first, because आपको पता ही है अगर हम बाद में आई मेकअप करते तो ज़्यादा नीचे आई शेडो वगैरह फैलने का डर रहता है। सो फर्स्ट हम करेंगे अब आई शेडो। सो मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ पैलेट में से। एंड देन वी ब्लेंड इट स्मूथली। वी आर क्रिएटिंग सम स्मोकी एंड सम ग्लिटरी आईज, so we are using just two colors. Now I am applying black eyeshadow in my outer corner of eye and now blending it nicely. And yeah, just trust the process. And I'm also like you guys, I don't know how to do makeup first, but I slowly learned it, and now I can do my makeup by myself like this. I'm not a makeup artist, but I also learned it from another social media planets I mean platforms. So you can also learn from like, so yeah, I'm applying a liner, and before it I applied a glittery shimmer in the center of my eyelid and in the corners. So now I'm applying a kajal on waterline and now smudge it nicely, and same thing I'm going to do on my eyeliner and blending it. And now I'm done with my one side eye makeup. Then I thought मुझे पहले फेस मेकअप कर लेना चाहिए वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो पहले मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, और फाउंडेशन थोड़ा बहुत ही लगाएंगे क्योंकि ये कोई मतलब पार्टी मेकअप नहीं है, नॉर्मल फेस्टिव लुक है। तो बाकी आप जब अगर किसी पार्टी या किसी वेडिंग में जाए तो भी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम करेंगे कॉन्टोर। Now we are applying a blush, and ब्लश के बाद हम लगाएंगे, पहले तो ढेर सारा ब्लश लगा ले बिकॉज आई लव ब्लश। और मैं ये ब्लश नोज़ एंड अपने फोरहेड एंड चिन पे भी लगाऊंगी थोड़ा क्यूट लुक देने के लिए। नाउ आई एम फिलिंग माई ब्रोज। सो पहले स्पूली की मदद से हम हेयर्स को डाउनवर्ड्स करके उसमें देन फिल करेंगे। नाउ स्पूली की हेल्प से ही अच्छे से उसे ब्लेंड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा वो क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर आपके भी मेरी तरह थिक ब्रोज हैं तो आप
प्लीज़ इसे ज़्यादा ना लगाएं और पाउडर की हेल्प से थोड़ा सा सेट कर लें जैसे मैंने किया है. नाउ वी कंसील अवर आईब्रोज. आई नो पहले कर लेना चाहिए था ये, बट यू नो आई सेड I'm not an artist, so I forgot. And now I am applying mascara. This is from Maybelline. So मेरी eyelashes already बहुत heavy हैं, इसलिए मैंने fall lashes नहीं लगाई. बाकी आप देख सकते हो मैंने दूसरी आई पे भी मेकअप कर लिया है. Now we are going to apply liner on the other side. Now set it with the compact and now apply highlighter on the cheeks and nose and forehead and chin. Then apply a lipstick. First I'm doing lip liner. This beautiful lipstick is from Mars. So now my look is complete. You can see. If अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो हाउस द लुक. सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. लव यू गाइज. ओके बाय. एंड डोंट forget to subscribe my channel.